So hello and welcome back to my channel, and in this busy schedule of day-to-day life, I find my peace in painting. And to help me with that peace today, I'm going to use Camlin and Camel products. So they have come out with absolutely amazing new look, and I ordered these Camel Oil Pastels along with Camlin Highlighter and permanent markers, where Camlin is all things stationery and Camel is all things art. I have always loved them. They're gonna give my art new soul. So let's begin with the artwork. So I've sketched out the basic drawing and now I'm using Camlin permanent marker. And now I'm using Camel Oil Pastels. तो मैं भी कलर से वहीं अप्लाई कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे वो पर्टिकुलर शेड नीडेड है, और अभी मैंने इसमें कोई ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं किया है. The best thing about doing still life is you get to learn a lot of things. जैसे इसमें हम पर्सपेक्टिव भी काफ़ी ध्यान में रखते हैं और लाइट एंड शैडो का काफ़ी फोकस रहता है इसमें. सो मैंने जब भी कभी कोई नया मीडियम ट्राई किया है, सेड ऑयल पेस्टल है या पोस्टर कलर्स है, आई हैव ऑलवेज यूज्ड स्टिल लाइफ एज अ रेफरेंस, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं एंड प्लस यू गेट टू लर्न अबाउट द ब्लेंडिंग मेथड्स ऑल्सो. इसमें जैसे कि मैंने अभी ऑयल पेस्टल्स में मैंने कुछ जगह पे फिंगर से ब्लेंड किया है, कुछ जगह पे मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी ब्लेंड करने की, बिकॉज द कलर्स आर रियली वेरी स्मूथ. सो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट व्हाइल डूइंग ऑयल पेस्टल्स, क्योंकि हम बहुत इम्पेशेंट होके ड्राइंग करते थे. सो द वेरी थिंग दैट आई लर्नड व्हाइल डूइंग ऑयल पेस्टल्स और एनी मीडियम, दैट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट while drawing and coloring also. Now I'm using Camlin Highlighter to highlight some of the shades. And finally our painting is complete. And if you want to get your hands on these beautiful colors and stationery, I mentioned the link on the screen, so you can visit the link, and I also mentioned the link in the description box so you can check it out. And I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.